percentage. I'm talking about the percentage solution. आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? We are talking about percentage solution. So in chemistry, you have already studied this topic in your higher secondary. Why we require different kind of percentage solution? We can require different units of quantity in chemistry. The different units of concentration. Say for example, normal solution, molar solution, millimole solution, then percentage solution. So these are the units of the concentration. Say for example, if I say prepare the normal buffer, prepare the normal saline. So you must be knowing what is normal saline. So you must be knowing 0.9% normal saline. So NaCl 0.9%. Now when we use the word percentage in mathematics, what does it mean? Percentage means in the context of 100. So when you say percentage, that means you are talking in context of 100. 100%. When you say 100, that is in the context of the 100%. Now, so suppose if I ask you, so when this is very easy way for the other than other formula, ये जो percentage solution बनाना बहुत आसान है. क्यों? Because you don't require to remember any molecular weight or gram equivalent weight. You just need to weigh the solution and accordingly you can prepare. Say for example, I say make 5% NaCl solution W by W. W by W percentage solution. You are getting what I am saying? Weight by weight percentage solution. So now if this forum is open, you can speak. It's what you call ये जो lecture है वो हम interactive mode पे ले रहे हैं. So you can speak in between. Don't bother about the recording. So how will you prepare percentage solution? Anyone? If I say 5% NaCl solution, how will you prepare? हितांशी कैसे बनाओगे? So Hitansi, are you not responding? That means you are not here. Sir, I'm here. So you should respond, sir. Please respond whether you know the answer or not. Now when I speak your name, you need to respond, okay? Yes, sir. Okay. Riva, how will you prepare? Yes, sir. How will you prepare 5% normal solution, NaCl solution, sorry. You would prepare that by diluting the reagent with a particular quantity of water, perhaps? Yes. Okay. Okay. So let me ask if it in confirm mode from some other student. Subhanjali, how will you prepare it? So I'm not sure how it will be done. You all have prepared for the NEET. You all have gone for the competitive exam. You have all studied chemistry, and it's a very simplest question. Yes, Ria. Sir, Sir, maybe what percentage we have percentage to by make? mass into mass of solution. Just 1 second. दो रेडियो स्टेशन जुड़ गए एक साथ. Okay, सुभांजलि कंटिन्यू चलो. फिर मैं रिया से इनका आंसर लेता हूँ. Sir, what percentage you told? 5%, 5. So, sir, we'll take 5%, 5 milligram of 5 gram of NaCl. Then and then we'll dissolve it in 100 ml of water or solution in which we have to make. Okay, Ria, what is your answer?
Thank you, Suvanli. Sir, Welcome. I was saying percentage of mass into mass of solution. See, you are complicating the things. It's very simple when you say percentage solution. So that means the gram of that particular solute. When you say percentage, that means that much per say if it is say 10 gram, 10 percentage. If it is said 10 gram, 10% LLCl solution, that means 10 gram in 100 gram of water. Why? Because I have written over here W by W. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों को देखिए. If it is water, for the water percentage solution, in case of water, you can say 1 kg water is equal to 1 liter water. क्योंकि उसका वॉल्यूम और वेट इक्वल है. लेकिन दैट इज नॉट सेम फॉर द ऑयल. आप तेल का डिब्बा मार्केट में खरीदने जाओगे तो 15 लीटर का प्राइस होगा. आपको लगेगा अरे यार ये मॉल में तो बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ तो कितना महंगा है. लेकिन आपके यहाँ जो तेल का डिब्बा बिक रहा है वो 15 केजी का है. मॉल में जो बिक रहा है वो 15 लीटर का है. सो 15 लीटर का ऑयल की बात करें तो करीबन होता है 16.5 लीटर. तो उसमें केजी का यूनिट है वो छोटा है, लेकिन एमएल में उसको करें तो 16.5 ml हो रहा है. समझ में आया? तो दैट इज द डिफरेंस इन केस ऑफ ऑयल. बट इन केस ऑफ वाटर आप 1 लीटर पानी ले लो या 1 केजी वाटर ले लो, दोनों इक्वल होता है. ओके. सो अगर आपको वेट बाय वेट सॉल्यूशन बोला है तो आपको NaCl जो है उसको क्या लेना है. NaCl तो हमेशा कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. तो जो वेट है उसका ले लिया हमने. तो 10% NaCl सॉल्यूशन का है. सो व्हेन नथिंग इज मेंशन देन द यूनिवर्सल सॉल्यूशन इज द सॉल्वेंट इज द वाटर. If it is specified that is as a solvent you take the kerosene or whatever alcohol, then it will be mentioned. Otherwise अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम aqueous solvent ही समझेंगे. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NaCl सॉल्यूशन. तो जैसे शुभांश जी ने बताया कि 5 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ml water, there will be 5% NaCl solution. This is correct, but here I have specified W by W. That means 5% NaCl in 5 gram. Sorry, in 100 gram of water. 100 ग्राम बोलो या 100 ml बोलो एक ही है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है. अच्छा, मैं दूसरा आपको क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूं. अब आपको सबको आना चाहिए. हाउ विल यू प्रिपेयर 12 12% NaOH सॉल्यूशन. जो NaOH होता है वो भी हमारा सॉलिड होते हैं. तो वो NaOH सॉल्यूशन Na सॉल्यूशन बनाना है, वो भी आपको W by W बनाना है. तो कौन जवाब देगा आप मुझे? यस बिपाशा से. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार. हाँ, बिपाशा सुनती नहीं है मुझे. सुना 12. नहीं सुना. हाँ, ठीक है. हाउ विल यू प्रिपेयर 12% NaOH सॉल्यूशन. 12% NaOH का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे W by W? Sir, यस 12 gram of बिपाशा. NaOH, ओके तांसी कंटिन्यू. 12 ग्राम ऑफ 12 NaOH. यस. would be dissolved in 100 grams of water. गुड. यस बिपाशा, व्हाट इज योर आंसर? बिपाशा मैंने रिपीट किया, अब तुम नहीं रिपीट कर रही हो. यस सर. हाँ बोल. सर वैसे ही होगा जैसे हितांशी ने बताया. विकांशी ने क्या बताया मैंने नहीं सुना. सर 10 ग्राम ऑफ NaOH into 100 ग्राम ऑफ वाटर. So you are not listening me properly. I asked you 12, 12. हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बोल रहा हूँ. माइक्रोफोन लगा के सुनो बराबर. यस सर. ओके. हाँ. Sanaya, now the next question for you. How will you prepare, Sanaya? Yes or no? Yes, sir. Sanaya, how will you prepare 20% KOH solution W by V? V means volume. By taking 20 gram of the solute divided by 100 ml water. डिवाइडेड बाय मतलब मैं आपको बोलूं लेबोरेटरी में जाओ तो आप डिवाइड करोगे. आप सिंपली बताओ No, मुझे. no, multiply, mix 100 ml, mixing 100 ml ऑफ वाटर और उसमें आप water. 20
Yeah, okay. So that is the 20% QH solution. Very good. Okay. Now, so this is clear. W by V or W by W is clear. It's very easy. But मैं आपको ऐसा बोलूं तो 0.5% solution of NaCl solution किसको आएगा? गौरी कृष्णा, how will you prepare 0.5%? Gauri Krishna, 611, So, are you here? yes, Yeah. sir, I'm here. So, 0.5 gram of NaCl. Hmm. It will be dissolved. Like if so, question. What is the question? Yeah, W yeah, by yeah. That W is or your right. Yeah. How will you prepare? That is the W by V. then 0.5 gram of what is that? NaCl will be dissolved in 100 milliliter of water. Good. Now, so this is very much clear to you. If it is solid, then you just take that particular gram and dissolve it. Now in liquid, I am asking now, this little tricky. Let me, please give me the answer. If I tell you to prepare 5% H2SO4 V by V, 5% H2SO4 solution V by V, how will you prepare that? 5 gram Sir, in 5 95 ml ml of of water. 5 ml in 95 ml. Her said 5 ml of H2SO4 and 95 ml of 95. the water. Any other answer? Okay, so hers is very correct here. You should not make this mistake. When it is both are liquid, you take the 5 ml of the H2SO4 and then you take only 95 ml. So the total volume will be 100 ml of the solution. And in that solvent is water, solute is H2SO4. It's a solute. तो आपका कितना बन रहा है उसमें 5%. दूसरा भी एक एग्जांपल यही सारे आप नोट करते रहना, मैं आपको जो बता रहा हूं तो आपको रिकॉर्ड में रहे. Prajit? Yes, sir. Yeah. How will you prepare? Say for example, 18% HCl solution. Eighteen ml of HCl in 82 ml of water. Good. Okay. मैम 2-3 और के ले लेते हैं. Diya, Yes, sir. how will you prepare 1% KCl solution V by V? So 1 ml KCl in 99 ml of water. Okay. Now when I'm taking another, I'm moving. How will you prepare 10? मुझसे बराबर सुना. How will you prepare 10% HCl V by W? I'm again repeating 10% HCl V by W. Sijil. Sorry, Silji. I don't know. 602. Yes, Sorry sir. if I pronounced you wrongly. How will you prepare 10% V by W KCl? 10 ml of HCl dissolved in 100 ml of water. Harsh, is she correct? No, sir, 100 gram. Okay, so here we end our meeting. So this is about the percentage solution. So मैंने जो आपको अभी एग्जांपल बताया वो परसेंटेज सॉल्यूशन के. नेक्स्ट लेक्चर में मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करेंगे. आपने जो भी लिखा है अपनी नोटबुक में आज के डेट के हिसाब से ये सारे एग्जांपल बना के रखना. ठीक है, देखते हैं एक वीक में फिर से मुलाकात होती है या अगले वीक में हम मिलेंगे. ओके, so you prepare your assignment and tell the students in your group that it is the last date for the stomach. नहीं बनाया है तो फटाफट बना के भेज दो. आपके पास अभी भी 4-5 घंटे हैं. ओके.
चलो ठीक है, ओके Thank you, बाय। sir. Sir, हाँ बोलो हितांशी। sir, can you please send that PDF again of pancreas? पैंक्रियास का पीडीएफ मैंने कहाँ दिया ये? हाँ किसको सर, दिया था? आपने मतलब मैंने किसी को बनाने दिया था ना। यस सर, मैंने बनाया था। हाँ तो दिया के पास कलेक्ट कर लो, ठीक है। सर बट आपने बोला था ना कि वो क्लियर ना हो तो एक बार आप फिर से भेज एक देंगे। काम तो आई थिंक कोई एक पेज मिसिंग था ना। हाँ थोड़ा याद आना, देख हाँ लेता हूँ। सर। हाँ कोई एक पेज मिसिंग था, मैं देख लेता हूँ कौन सा है, या तो फिर मैं सारे पिक कर तुम्हें हितांशी ईमेल कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ओके ओके सर, हाँ थैंक चलो यू सर। हाँ बाय।